Good evening everyone. Today I'm going to provide you the new video of chemistry. This is the water, chapter water. Today I'm going to share with you a very important topic. This is known as the anomalous expansion of water. This is very important. Why? Because this is the one important quality of water. It shows the opposite characteristic from the other substances. What is it? Let's start. The anomalous expansion of water. Water on cooling first contract, but at 4 degrees Celsius start expanding till it freezes into solid ice at 0 degrees Celsius. सब सब्सटेंसेस से डिफ्रेंशिएट करता है वाटर बिकॉज वन इट्स गोइंग टू बी कूलिंग डाउन. तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एट द 4 डिग्री सेल्सियस इज स्टार्ट एक्सपेंडिंग. जबकि अदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है तो दे ऑल सब्सटेंसेस स्टार्ट contracting, but the water is the one and only substance. It has started expanding till it's freeze into solid ice at 0 degree Celsius. I already explained the freezing point. For the pure water it is 0 degree Celsius, and if the impure water, if there is any organic material or substances or mixture of gases are present in the water, this is known as the impure water, and that time the minus 50 degree Celsius is the freezing point of the that kind of water. Hence, water at 4 degrees Celsius has maximum density and minimum volume. The density of ice at 0 degrees Celsius is lower than the density of water. From the common water, ये क्या हो जाएगा, इसका density क्या हो जाएगा, it is lower than the density of the water as the form of the ice. Therefore, ice is lighter than the water, and hence it floats on the surface of the water, is called the anomalous expansion of the water. This paragraph is very important to you because this is just showing the results of the anomalous expansion of the water. How the water as the form of ice is going to float on the surface of the water. In case of the if I will give you the one example. Conjugation of the anomalous expansion of water. Due to anomalous expansion of water, the water at the bottom of the pond or lake in winter is warmer than the at the surface. Ice is lighter than the water, therefore it floats on the surface of water and forms an insulating layer that prevents the underlying water for further cooling. Because what is that cooling, it is going to be continuously, वो उसको insulate करता है, heat को ट्रैप होने से रोकता है. तो जो लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर आइस की, इट्स गोइंग टू बी लाइक एक इंसुलेटिंग वहाँ पे रिजर्वायर का काम करता है. द वाटर बिलो द आइस रिमेन रिलेटिवली वार्म एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एंड सील्स सर्वाइव. बहुत ज़्यादा जो आर्कटिक जोन होता है वहाँ पे जब काफ़ी कंप्लीट मोटी थिक लेयर जो आइस की फॉर्म हो जाती है लेक्स और रिवर्स के ऊपर जो भी होता है, सो वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को. बिकॉज जो भी वाटर जो रहता है अंडर दैट वन आइस लेयर, उसके नीचे जो वाटर होता है इट विल बी वार्म इनफ टू सर्वाइव द एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. The specific heat capacity of water is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस पे इसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी हीट को रेज किया जाता है वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है वाटर की. क्लियर? सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. कैसे इसको करेंगे? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एट 15 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस. जो किसी भी अदर सॉलिड और लिक्विड जो कि मैटर के दो अदर फॉर्म्स हैं उनसे सबसे ग्रेटर होता है. ठीक है. दिस इज़ द वन रीज़न वाई वाटर इज़ एन एक्सीलेंट लिक्विड टू बी यूज इन कूलिंग सिस्टम. दैट्स वाई हम जहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं वहाँ पे वाटर स्पेशली यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज of its high specific heat capacity that oceans and seas warm up slowly in summer and cool off slowly in winters in comparison to land, and thereby serves to moderate temperature changes on the coastal region. And this is the reason behind that जो coastal regions होते हैं वहाँ पे temperature will be moderate due to this one only कि easily वहाँ पे temperature energy trap नहीं कर पाता है, या मतलब temperature is just cool down because of water. Specific latent heat of vaporization. The next topic is this.
There are other two terms about the specific latent heat of vaporization and the specific latent heat of the fusion. Vaporization meaning is that specific latent heat of vaporization is the amount of heat required to change 1 gram of water at 100 degrees Celsius into 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. क्लियर? जितना भी चेंज टेम्परेचर को चेंज करने के लिए चाहिए कि अगर आपने जैसा भी देखा होगा, अगर मैं लेटेंट हीट की बात करूँ वेपोराइजेशन के केस में, तो ये क्या होगा, जितना भी टेम्परेचर को 100 डिग्री जहाँ पे बॉईल होता है इट स्टार्ट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो उस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो भी हीट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। When water at 100 degrees Celsius converted into steam at 100 degrees Celsius, it absorbs energy equal to latent heat of vaporization. Thus, the steam at 100 degrees Celsius has more heat energy than water at 100 degrees Celsius. Hence, steam produced more severe burns than boiling water. It contains more heat comparison to the boiling water. It's absorb more energy. That's why कभी जब burning होता है तो सिंपल बॉयल वाटर से ज़्यादा स्टीम के केस में ज़्यादा जल्दी से बर्निंग होता है, ज़्यादा एक्सट्रीम वाला बर्निंग होता है विद द स्टीम। इफ़ यू से दैट इन केस ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, specific latent heat of fusion is the amount of the heat liberated by 1 gram of water at 0 degrees Celsius to form 1 gram of ice at 0 degree Celsius. The latent heat of fusion of ice is 336 joule per gram of 80 calorie per gram. When ice at 0 degrees Celsius melt from water at 0 degrees Celsius, it absorbs heat energy equal to latent heat of fusion from the surroundings. Okay, it's take the energy from its surrounding. Thus, ice at 0 degrees Celsius has less heat energy than water at 0 degrees Celsius, and hence ice is more effective in cooling than water at the same temperature. Clear? So now the next one is the water is a universal solvent. How we can say that the water is a universal solvent? It is water is a remarkable solvent and dissolve many substances forming aqueous solution. It's known as the aqueous solution because when we are just going to make a solution of the any substance with the water, that kind of solution is known as the aqueous solution and is therefore described as a universal solvent. Water is a polar covalent compound and has a high dielectric constant, due to the which it has a unique ability to reduce the electrostatic force of attraction between the positively and negatively charged ion of an electrovalent compound, thus ions of an electrovalent compound. Clear? So here we are going to finish this one topic, means related to the what are the physical properties of the water. And the one thing is there, the reason is that the impossible to found absolutely pure water anywhere in the nature, because it consists it is easily so many substances can be easily soluble in the water, so it is not present in the pure form. Clear? So some minerals and gases are already included in this water. So hope this is clear to you, and I'm going to finish this one topic of the physical properties of water. Let's start the new topic with the chemical properties of the water. It will be coming to next video. So thank you, have a great day.